today's video we will completely understand a micro banking system developed in C++. The project stores bank accounts records in a CSV file, allows searching accounts, updating data, deleting accounts, depositing money, withdrawing money, and most importantly, uses an ESP32 as a hardware security key. So, if the correct ESP32 is not connected, the banking system will not run. In this video, we will go from beginner level to advanced level and understand very every function step by step. So, firstly, we see before writing any logic, we import libraries like window H used for COM import communication, serial communication with ESP32. For example, we handle like H serial and serial type. This create a communication channel with the ESP32. Next, we use C Studio library used for updating or recording, like deleting records, updating or removing. You know. So next we use string, include string. So instead of we use it instead of arrays, like we string name like Ali, Asim, and other names like this. So IO stream is the input and output, like C in, C out we use for it, and F stream is for file reading and writing files. You know. So the system structure is I will show you the system structure. So user and menu. User menu कन्वर्ट कर लाइक मेन्यू देखता है और बैंकिंग सिस्टम CSV फाइल डेटाबेसेस होता है बैंकिंग सिस्टम में, एंड बैंकिंग सिस्टम में ESP ऑथराइजेशन होगी, लाइक ESP अगर ग्रांटेड करता है अगर उसको इंफॉर्मेशन, तो हम देख सकते हैं, यूज़र देख सकता है, वरना अगर ESP के पास लाइक अगर की होगी तो वो अपना इंफॉर्मेशन देख सकेगा, वरना नहीं. That's for security, and it's very good for the upcoming time. So we see now the code hardware authentication function. We use this act like a security guard before banking start, you know, or it's executed. It's here it is executed or verify. So ठीक है. Now we step 1 हमारा है ये कि create a COM, you know, create a COM. So we choose a COM 5. So we done with this, connected to ESP32, connected to COM 5, and now we configure serial communication. You know, that's these settings must match ESP32 settings. ये ESP32 की सेटिंग्स से मैच होगा तो ही ये चल पाएगा. और दिस इज दी सेंड चैलेंज, और यू नो सेंड चैलेंज रिक्वेस्ट सेंड करेगा ये सेंड चैलेंज की आर्ट और कैरेक्टर का प्लेन टेक्स्ट टू ESP32, you know, or ESP32 response access here, here ESP32. If the receive key is correct, then he access the information. Or so it's true, so it gives you the information of the authorized. If not, then they may not
solve your problem and do not give you the information. Real world apology is password. If the password is correct, then computer welcome you. If not, then computer will not access you the files of banking system. So initialization database create CSV files if it does not exist. CSV file means comma separated values. So that's the plain text, account ID, name, current balance. We put here account ID and name and balance. So it is the logic, unique ID, or like if every unique ID. So if IST bank CSV, so यूनिक आईडी से ये होगा ना कि डुप्लीकेट आईडी अकाउंट्स प्रिवेंट हो जाएगा. इसी तरह ये जो है ना आगे चलता रहेगा और सिस्टम चेक करता रहेगा. इफ़ नॉट फाउंड देन इट्स गिव द फॉल्स आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगी फिर और वो नहीं बन सकेगी. So from here it gives you read line by line and extract ID. So आउटपुट इसका अगर आएगा तो 101 आ जाएगा अगर ID पुट करते हैं तो. इसी तरह आगे भी अकाउंट क्रिएशन आ जाती है. हेड्स फॉर अकाउंट क्रिएशन वर्ड रिपीट होता है बार बार. गेट न्यू अकाउंट्स और इनपुट लेगा आपसे ID, input ID, input name and input balance. So we put here our ID, name and balance. कोड क्रिएट हो जाएगा फाइल. सो स्ट्रीम फाइल्स बन जाएगी यहाँ पे. ओपन फाइल सर्च ID, if we search ID. So here we search IDs, find account using account IDs और name ID के लिए ID सर्च करें यहाँ पे. और इसी तरह अपडेट और डिलीट भी हो सकता है अकाउंट. अपडेट रिपोर्ट जैसे अपडेट और डिलीट हो जाएगा तो अकाउंट जैसे वो इसी तरह ये भी रिपीट होगा लूप. और तो इसी तरह ये फाइल अपडेट हो जाएंगी और डिलीट भी हो सकती है. रिमूव भी हम अकाउंट कर सकते हैं और दोबारा भी बना सकते हैं. ये वाई टेम्प फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं? वैसे ये टेम्परेरी फाइल यहाँ पे हमने आईस्टीम टेम्प फाइल किया हुआ है. सो ये सोल्यूशन हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि कॉपी एवरीथिंग एक्सेप्ट दी रिकॉर्ड बीइंग चेंज. कॉपी एवरीथिंग, क्योंकि अगर कॉपी एवरीथिंग करेंगे तो एक्सेप्ट द रिकॉर्ड बीइंग चेंज, यू नो. So then now we take example. तो एग्जांपल ले लेंगे उसकी ओल्ड कोई भी मतलब पुरानी या नहीं, फिर वही आईडी दोबारा न्यू डालेंगे उसी को. मतलब अगर नाम चेंज कर देते हैं तो ऐसे यू नो, अगर आईडी हमने कुछ और डाली और उसका नाम चेंज कर दिया इसी आईडी के साथ, तो इसी तरह अपडेट हो जाएगा. ठीक है, अहमद से जैसे अली करना हुआ तो ऐसे यू नो. और इसी तरह ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं हम यहाँ पे. अपडेट रिपोर्ट के बाद गेट अ न्यू लाइन एंड बार न्यू लाइन ट्रांजैक्शन कर लेंगे. इसी तरह ट्रांजैक्शन भी ओके लूप में बार वो होगी और डिपॉजिट करेंगे अपना आईडी. ट्रांजैक्शन आईडी करेंगे तो आईडी आ गई हमारी. तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी आ गए, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं.
स्ट्रिंग नंबर के लिए भी होता है और दूसरा भी होता है, तो इसके लिए नेम के लिए स्ट्रिंग को डबल करेंगे so that it what the number back to strings. मेन फंक्शन जो है ना यहाँ से इधर से शुरू हो रहा है. There is also for size or comma types. That's the main function for program. एंट्री पॉइंट है ये, मेन एंट्री पॉइंट है. उसके बाद डिस्प्ले वैल्यू स्क्रीन करेगा ये वैल्यू और ऑथेंटिकेट करेगा ESP32 इधर से. सो सिस्टम डिनाइड, सो दैट्स द सिस्टम. तो प्रोग्राम एग्जिट कर देगा और डेटाबेस पर अगर ट्रू होगा मैंने कीप्स रनिंग चलता रहेगा. और इसी तरह वहाँ से इसी तरह क्रिएट अकाउंट, सर्च अकाउंट, अपडेट और डिलीट, डिपॉजिट, विड्रॉ, एग्जिट कर देंगे. उसके बाद दैट्स द एडवांस कंसेप्ट यूज्ड हियर इज इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है आपको बताया, और स्ट्रिंग पैजिंग और डाटा वैलिडेशन इजीली. दैट्स फॉर क्रिएशन एंड the things, report, search ID, hardware ESP32 है. This is the serial port आ जाएगा यहाँ पे 5 है, मैंने 5 ऊपर चूज़ की थी, सो 5 के साथ चलेंगे. So this is the end of our program. Today we learn how a complete micro banking system is built in C++. We understood file handling, searching, updating, deleting transaction, like serial communication with ESP32, hardware authentication. The project is excellent example for semester projects and finally at beginners. That's the beginner project for our C computer programming. So that's the code, total code of our